मैं सबका स्वागत करता हूँ. So Jack, please, you are requested to carry on the show. Yeah, carry on the show. Yeah, please. Welcome. All right. Thank you, Delicious, and thanks everyone for your warm welcome. David and I are very pleased to be here again. Okay, so Dalip and I have just been discussing what are these rootstocks. We can see M9 is obvious because it develops a much bigger diameter, the rootstock, bigger than the sign. And we can see behind you, they are clearly all M9. But M7. अच्छा, ये फिर मैं बोल रहा था इनको, मैं M7 क्योंकि मैंने खुद फार्म में काम किया है, तो हमारे पास M4, M6, 7, 24, 20, M27, 11, 106, 109 तब से परखे हमने, पर पॉपुलर जो हुए हमारे M7 भी पॉपुलर हुआ. उसकी सबसे ज़्यादा खासियत है कि सबसे ज़्यादा सकरिंग होती है उसमें, हर साल ये शूट निकलेगी. बाकी बहुत अच्छा रूट स्टॉक है वो भी. पर जो M सीरीज़ के है ना जी, वो वुली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट नहीं है. जो MM सीरीज़ के रूट स्टॉक है वही वुली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट है. ये बात ध्यान देने वाली है. ठीक है जी, प्लीज. Okay, so if these trees are M7 or 111, and if this is new ground for apples, we can say probably they're a little close, and they're going to want to grow bigger trees. So we have a challenge to contain them in the space they have been given. Yeah. Okay. And David has measured the height at what's that, about 12 feet, 3.3 metres. So really they're probably at a maximum height now. They have reached up to desirable height. Yes. Yes. Yeah. So we need to contain them in the height, and because of the spacing, we're trying to contain them in the allocated space. Yeah. So you've observed, Dalip, that most of the branches have a bow shape. Bow shape. Yes. Yeah. So we actually have a challenge of how do we manage the upright growth on each of these branches. We also, in terms of the number of branches, we have many branches per tree, which is good to have so many branches. But when I look at the tree as far as the pruning goes, I think that I would like to consider removing some of the stronger branches because they are showing signs of growing out of control. ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ प्लांट की जो ग्रोथ देखी है वो बिल्कुल धनुष की तरह बन गई है ये ना. अब इससे जो आगे ग्रोथ आ रही है, कहते हैं ज़्यादा बीमों की फॉर्मेशन भी होनी. एक चीज़ तो ये बोल रहे हो, ठीक है, इसको भी करेक्ट करना है. ये ऐसे नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी. दूसरी चीज़ ये भी देख रहे हैं इसमें कि इसमें नंबर ऑफ जो रखे हैं ना फेदर, वो भी कुछ ज़्यादा लग रहे हैं. कम चाहिए. ठीक है, 12 फीट में आपके 35-36 तक चलेगी, है ना जी. हम बोलते 4 से 6 इंच पे, ये इस डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे, है ना. अगर उससे घने हो गए तो आप 12 फीट में आप लगा दो. अगर 3-4 भी हो गए 4 इंच पे तो 12 चौके 12-3 36 3 ही हो गए. ठीक है. So when we look at the branches, on a weaker branch like these ones, we see very good spur development. We have a short shoot, and on the end of the shoot, the terminal bud is a spur, and that is a very strong bud. That will set fruit, that will grow good size apples, and so wherever possible we want to keep the terminal bud, and with 2 fruit on this bud it can bring this branch down into pendant position. Yeah. So, shall I stop?
ये बोल रहे जो वीकर ब्रांच है, देखो यहाँ से नीचे को जो बेंड की है तो इसमें थोड़ी ग्रोथ आई और बाकी बीम बन गए। देखो इसमें यहाँ भी बीम बन गया, यहाँ भी था फ्रूट लगा, यहाँ भी नेक्स्ट ईयर के लिए बन गया। ये इस ईयर का है, देखो ये बोल रहे बहुत बढ़िया है। अब फ्रूट लगेगा तो नेचुरली इसकी शेप अपने आप आ जाएगी। यहाँ क्या हो गया, यहाँ कट मार दिया जो कि नहीं मारना था, और देखो आप ग्रोथ। अब अगर यहाँ भी कट मार दिया तो यहाँ शूट ही निकलना, यहाँ फ्रूट नहीं लगना। चाहिए क्या हमें, फ्रूट। ब्रांच चाहिए वीक। अल्टीमेटली जो मोटी होती जाएगी वो तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी, है ना, समझ रहे ना आप? And I think you said already, Dalip, but yeah, we try and avoid to head back because it creates a strong response, and that's counterproductive. It's not helping us. Yes. Yeah. Okay, so in terms of the pruning, well, the other thing we can observe here is that we have, for most trees, we have more growth in the top of the tree where there's maximum sunlight, and slightly less growth in the bottom. So the challenge we face over the next years is to try and get a balance between the growth in the top and the growth in the bottom. Over time, unless we do the correct pruning, the spurs in the bottom half of the tree will become weaker, and unless we take the right steps, we will get too much growth in the top, and we will get beginnings of an umbrella which will create more shade in the bottom. So we have to look to try and maintain the strength of the spurs at the bottom and prevent the development of shade coming from strong growth in the top of the tree. अच्छा, हम ये समझे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मोस्टली क्या होता है कि ऊपर, समझ रहे ना बात, वहाँ अगर कम बीम होगे वो कहता है वो अम्ब्रेला बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमें नीचे से ही हवा पानी के लिए ऐसी प्रोनिंग करनी है ताकि हमें ऊपर से नीचे तक हर उसमें ब्रांच में एक डिज़ायरेबल क्रॉप मिले, ना कि वो ऊपर छाता बना के नीचे शेड डाले, ना ही नीचे वीक रहे। तो इसमें भी रिन्यूअल ऑफ स्पर होनी चाहिए, क्योंकि ये पहले के बने हैं ना, वो भी हमें पता होना चाहिए कि नीचे भी कैसे वीक ब्रांचेस में बनाने हैं। मोटा डंडा हो जाएगा तो इसके लिए कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, है ना। ये ग्रोथ का हमने बैलेंस रखना है, और मेन है हवा और सनलाइट हर ब्रांच पे जब होगी तो इक्वल डेवलपमेंट ऑफ स्पर और फ्रूट, क्वालिटी फ्रूट की होगी, ठीक है नहीं। Thank you. So when we look at the younger branches in the top of the tree, the ones that have had minimal heading back have developed, I think, the best. Like this branch here, it has a lot of good spurs and hasn't made too much vegetative growth. That's good. And the same with this one behind, maybe just a minimal heading cut and 3 short shoots. So that's the sort of response we want. Our style in New Zealand is that we would not do those heading cuts at all. We would really want to have fruit to bring the branches down. So there's 2 options. Do you start at the bottom and work up, or you start at the top and work down? Here's a question. Do you have a practice in Himachal? Do you have a preference? We always start from the top. Okay, yeah, and that's good because that's the most important area to fix any problems. Yes. So my concern is the strength of this branch, and also how strong and upright that is. So what I'm going to do is remove both of those. And I know that I have cut off fruit, but I'm mainly doing it to prevent the development of a problem. Whoops, we're stuck in the wire here. So I've done a bevel cut, and what we would like to see this coming year from the dormant buds at the base of that cut is the development of some flat branches. हाँ, इन्होंने यहाँ बेवल कट ही दिया है
कहने का मतलब है ऐसी ब्रांच थी ना जी, तो इन्होंने ऐसा कट दिया यहाँ और इतना रह गया यहाँ पे, उसमें होती है डोरमेंट आइज, वहाँ से आपकी एक पतली ब्रांच ही निकलेगी। ठीक है ना जी। इन्होंने यहाँ कट क्यों दिया, आप देख रहे होगे ना, स्पेस देने के लिए, मोर एंड मोर स्पेस, ताकि नीचे ना हाइड करे। कल को ना अब ऊपर से अगर छाता बन गया इसका तो नीचे नहीं देगा धूप वगैरह आने, और वो स्ट्रॉन्ग भी हो गई थी बहुत ब्रांच है जो आपके लीडर के साथ कम्पीट कर रही थी। ठीक है ना जी। इन्होंने उसके नीचे वाली वीक ब्रांचें रखी है जो आपको बिल्कुल फ्लैट है और जिसमें बढ़िया स्पर बने हैं, और वो एक डिस्टेंस पे होनी चाहिए, शेड नहीं करनी चाहिए धूप और हवा के लिए। So I don't need to do any more pruning in these branches up here, and this one also is okay, and it has good fruiting buds on the ends of those shoots, so we don't need to prune that. Also here we try and keep our branches simple, and long and simple is what we're shooting for. Yeah. But again, I don't think I need to prune that one either. Here, this one has been shortened back to leave a stub, and we have one branch that's a little bit upright and a flatter one. So I think probably the simplest thing to here would be to remove the upright one and keep the flatter one, and that can develop into this space this coming season. Why you left that stub? Oh, because I'm a bit short and I can't reach. Yeah. Would you remove it? No. Yeah, I won't be able to cut rather than. Okay. Otherwise, if that branch will bear fruit and it will broke down. Okay. Yes. Get broken down. Okay. All right. I was. Isn't it so? Yeah. So a little bit long there. Sorry. Oh. Yeah. Okay. It's better? Yeah. अब अगर उस ब्रांच में इन्होंने इतना स्टब छोड़ा था, मैंने इनको करेक्शन, इज इट राइट करेक्शन? Yes. अगर उस स्टब में एक पतली ब्रांच है, फ्रूट लग जाता तो ब्रांच के साथ ही टूट के नीचे गिरना था वो, है ना जी, उसमें आगे स्पर था। अब स्टब नहीं है, अब यहाँ से एक कंप्लीट ब्रांच निकलेगी जिसमें फ्रूट लगेगा तो वो टूटेगी नहीं। Okay, so this branch really is a problem already. Here, one would be like a Hamachi heading cut. So I do that, but we're going to see just more growth, and this branch is stiffened up. Yeah. So it's not going to. We're going to get more of the bow shape. Yeah. So that's not great. The next option is to come back to there, and at least we have some flatter growth. Yes. But again, it will grow upright. The problem, I guess, is the caliper of the branch, the size of the branch, and the fact that it just has 2 spurs on it. And again, it probably would grow strongly. So my preference, because we have a lot of extra branches, is actually just to remove it and start again there with the bevel cut. अच्छा, ये वही बात होगी थी जो मैंने ऊपर भी बोली थी आपको, है ना जी। कट तो दे दिए, पर ये ब्रांच पीछे को स्ट्रॉन्ग है, इसमें बीम कम है, और ये बन गया स्टब। वो था छोटा, ये बन गया बड़ा स्टब। अब कट तो मार दिया और ग्रोथ ही होगी यहाँ से आगे, ठीक है ना जी। इसलिए इन्होंने वापस लाया इसको, क्योंकि स्टब बन गया है। क्यों नहीं यहाँ से एक फ्रेश ब्रांच ली जाए, क्योंकि इसमें ब्रांचेस की कमी नहीं। अगर तो कमी होती शायद हम इसके बारे में रखने के बारे में भी सोचते, पर अभी इसमें ब्रांचेस की कमी नहीं है ना। इसमें क्या है, इस ट्री में जो देख पा रहे हैं कि स्पेस कैसे क्रिएट करना, ब्रांचेस कुछ घनी हो। Okay, so these next branches are all good. I will keep them, and I don't need to do any pruning. They are quite weak. They have a lot of spurs, and they're making some good regrowth. So we only prune if we have a reason. So no need to prune there. Coming down a bit further, we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches that all have a little bit of a problem to fix. Stiffness. They've got stiffness and they're upright. Yeah.
This is the worst one, isn't it? Because we see how strong that's growing. My feeling is because we have a surplus of branches, I'm going to remove that as a problem. Strong. This is better. Strong. Yeah, thank you. So, yeah, there would have been the option, I guess, of that. And we could have carried some fruit there, but we would get upright, strong growth, and we'd still have a headache. And because we have a lot of extra branches, we're best to remove the problem this way. समझ रहे हैं ना आप? वही बात बताई उन्होंने दोबारा से कि जो स्टिफ हो रही है और अब ये कम्पीट कर रही है। आप देखो आगे छाता इसका भी बन गया, कट लग रहे हैं ना, तो छाता हर कहीं से शूट निकल रहे हैं और ऊपर से स्टिफनेस होगी इसमें। अब आगे आप ग्रोथ नहीं दे सकते। ग्रोथ आपकी M9 का है, इतनी चाहिए, बस इतनी चाहिए आपको ग्रोथ। वीक ब्रांचेस लेस ग्रोथ, ज़्यादा स्पर और वीक पे बनेंगे वो। अब स्ट्रॉन्ग का देखो आप, सारे आगे ना ग्रोथ में, ये देखो आप, है ना। तब ये कह रहे हैं कि इसमें ब्रांचेस की कमी नहीं है, हमें इसमें स्पेस देना है, ठीक है। और जो स्टिफन्ड ब्रांचेस है या जो मोर कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस है फॉर न्यूट्रिशन, उन्हीं को रिप्लेस करना है और एक प्रॉपर स्पेस देना है। इस बात का आपने बड़ा ध्यान रखना कि ये जो ब्रांचेस के बीच में इनका स्पेस है, ये फॉर एवर के लिए बन गई एक आपकी इसकी पिक्चर है, और वहीं से निकलनी। बाकी जो नहीं रखनी वो नहीं रखनी, इसलिए पता होना चाहिए कौन सा कट लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। Of course, I can't remove all of these branches, even though they have some issues or some problems in one lot. No, so I'm trying to take the worst ones first as a priority. Yeah. But the next ones, I really have to do some compromise cuts to get some production, and while the other ones continue to develop. So I have to think, well, how can I keep enough spurs? Well, this would maximise the crop to keep all of the spurs. There's obviously some choices in how this could be done, or the other option, my first choice was that. So enough spurs, we'll probably get some reaction growth, but at least we'll carry the crop, and that's why we're here. And the same with this one over here. This is all upright. If I remove that, I'm keeping enough spurs to carry a full amount of fruit, so it's a compromise. Quite likely, the time next year or the year after, the right decision would be to remove that if it continues to grow strongly. Here we're overlapping, we're very close together. This is a more fruitful branch, and this one is growing a bit more vegetatively. Because I've done 2 or 3 quite big cuts here, I'll make the decision to keep all 3, and just do something of a heading cut to flatten the branch and to keep these spurs here. अब ये कह रहे हैं कि एकदम ही नहीं हमने पीछे पड़ जाना अब ब्रांचेस के, ये धीरे धीरे हमने रिप्लेस करनी है, क्योंकि अगर आप सारे मोटे कट लगा देंगे तो प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा, हो सकता है कैंकर पकड़ जाए, ठीक है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि इस बार मैंने 2-3 कट मोटे मार दिए, इतना सह लेगा प्लांट। अब आपको अगली बार के लिए ये जो कर रहे हैं दिक्कत, अगली बार के लिए आप 2-3 इनको रिप्लेस कर दे जो ज़्यादा स्टिफ हो रहे हैं। इस बार आप इसमें क्रॉप भी ले लें, ठीक है। इन्होंने 2-4 कॉम्प्रोमाइज़ कट मारे हैं कि जो ऊपर कोई ग्रोथ ना ले, ठीक है, ये फ्लैट ही रहेगी ताकि, समझ रहे ना आप? समझ गए? कोई क्लैरिटी होनी तो पूछ लेना, ठीक है नहीं जी? उससे क्या हो जाएगा कि स्पेस भी। Yes, so summer pruning is a good option, and where you have this planting with maybe it's with 111 or M7, you're going to get a lot of growth and the trees are close together. So summer pruning is good because it suppresses the vigor, and you can get the development of fruit buds in behind your summer cuts. But we can't give replaceable cuts in summer. That's right. Branch replaceable cuts. Yes. Only pinching. Yeah, and removal of
excessive upright vegetative shoots, and that should be your target, I think, in the summertime. In fact, you're looking. Where's a good example? You're looking, well, to remove this sort of growth, because you don't want it. It's not of no benefit. Yeah. So good question. Okay, so coming down, and this is hidden perhaps, so I'll remove it and we can see. So this one was also headed back quite strongly, and again we've got the same problem of the response. The thing about, and maybe to make this point, we don't need to head back to create fruit buds. The clonal rootstock will create the fruit buds for us. So we just have to let the natural process of development of buds on second year, third year wood allow that to happen. We don't have to force it. It will happen naturally. ये कह रहे हैं कि हमें स्पर बनाने के लिए कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा क्लोनल रूट स्टॉक लगा है ये उसका कैरेक्टर है कि उसमें जल्दी फ्रूटिंग आएगी। ऐसा नहीं कि आपके सीडलिंग की तरह 10 साल लेगा। ये क्लोनल रूट स्टॉक का मतलब है आपके साइज़ को कंट्रोल करता है, अर्ली फ्रूटिंग लाता है, रेगुलर फ्रूटिंग होती है, क्वालिटी फ्रूटिंग होती है। तो जैसे अब ग्राफ्टेड के बाद 3 साल में इसमें स्पर बनने नेचुरली शुरू हो जाएंगे, इंस्टेड के आप इसको काट के, क्योंकि ग्रोथ तो हमने लेनी नहीं है, हमारे पास स्पेस ही नहीं है। अगर हम काटेंगे उतनी ग्रोथ आएगी, तो स्पेस नहीं है, तो जो करंट ग्रोथ होगी उन्हीं में आपके अपने आप स्पर बन जाएगी। हेडिंग बैक बिल्कुल नहीं, वो अपने आप आपको डी में बढ़ने शुरू हो जाएगी। आप अगर ये सोचो कि स्पर बनाने के लिए कोई कट मारना है तो वो गलत बात है। बिना कट किए हुए में ज़्यादा स्पर बनेंगे। So when we look down to the basal part of the tree, we can see some very weak shoots with a thin diameter. Yep. So the problem with these is that they are quite shaded. The spurs are quite weak. You can see they're not big fat spurs, they're skinnier ones, and they are likely to grow fruit that is small and with poor coloration. So I'm going to remove those. And we might get some regrowth and some replacement branches. So over time we want to recycle our branches. We're still a little bit crowded here. ये शेड में थे ना, वीक थे, पूरे ऊपर शेड पर भी, ऊपर से वीक बीम है इसमें। वीक बीम में लगेगा भी तो छोटा लगेगा, उतना क्वालिटी वाला लगेगा, सेट भी हो जाते हैं फ्रूट ना, so इसलिए रिमूव किया। Here's a good one to discuss now. So this branch again is showing strong vegetative shoots, and the branch is low. For me, this is a problem branch that we can. Yes. Okay. Right. So yeah, you've some prune there. Yeah. My preference would be to remove it actually. And what I want to see is that this branch that we have not touched, which has a good terminal buds and good spurs, we leave it alone, we'll let it fruit, and it will naturally move into this position. Yeah. और वहाँ उतना ही स्पेस है जाने के लिए। ये तो ग्राउंड में मिल चुकी थी, है ना, स्टिप भी हो गई थी, और इसका बन गया ये। अब ये सीधी तो हो ही नहीं सकती कभी, है ना, ये हाँ सीधी तो होएगी नहीं कभी, इसलिए इसको, और compete भी कर रही थी उसके साथ, और शेड में भी आ रही थी, सारी ट्री की ग्रोथ भी ले गई। So we're really close to finishing here, and I might just seek some feedback from you, or from everyone, just about the question is when to stop, and I'm not, totally familiar with the, the fruit set and how reliable it is. If I was in New Zealand, I would probably take about 2 more of these branches out to space them out. But some feedback just on how reliable is your fruit set.
on where we've got to at this point would be helpful, and any observations from you, Sally? No problem, sir. I think it's assured crop over here. Yes. We Okay. have no problem at all. Yeah. But due to this hotter region, Yes. the more cuts may leads to cancer. Yes. Yes. We have to give limited cuts Yes. in Okay. a particular season. Yes. इनका Okay. कहने का मतलब है मैं इसमें बोलो स्पेस हमारे न्यूजीलैंड में अगर ये पौधा होता तो मैं इसमें और ब्रांचों की छंटाई करता और स्पेसिंग देता, पर यहाँ हिमाचल में आपके पता नहीं कैसा बिहेव करेगा, तो मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता कि मैं अपनी तरह ही इसको डेवलप करूँ। पर इतनी ब्रांचेज में, क्योंकि ये वीकर ब्रांचेज अब ज़्यादा आपकी ये कॉम्पिटिटिव ब्रांचेज नहीं है, अब हम इसको रख सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्लांट की एक ही ब्रांच लग रही है मुझे जो ज़्यादा कंपटीशन में, बाकी ये इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। इसलिए आप इसमें फसल ले, जब आपको लगे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आप इसमें स्पेस, अगले साल को आप इसमें स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, जितना आप स्पेस रखेंगे उतना क्वालिटी फ्रूट लगेगा जी, उतनी आपकी बीमारियां कम लगेगी। धूप और शेड नहीं चाहिए बस। अब नीचे वाली ब्रांच को शेड है, ऊपर वाली में क्वालिटी फ्रूट आएगा, नीचे वाली में हरा फ्रूट रहेगा। फिर आप बोलेंगे कि ये वैरायटी ख़राब है, नीचे तो हरा लगता है ऊपर लाल लगता है, वो तो देखो आप, वो तो नेचुरल चीज़ है ना। और नेक्स्ट ईयर सर these two branches also remove next Yes. Yes. नेक्स्ट Yes. हाँ इस साल, हाँ नेक्स्ट सीजन, So- क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि काफ़ी रिमूव कर दी उन्होंने, स्ट्रेस में ना आ जाए पौधा, इसलिए इस साल इतनी बियर कर सकता है। नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास है ये ऑप्शन है हमारे पास, और ब्रांचेस भी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी है, तो हम इनको रिमूव आपके पास साइकिल है हमारे पास, साइकिल है आपके पास। अब तो अब अगले साल को ये ब्रांच आ जानी तब को वो आपको वैसे लगने की, जहाँ से आपको चार नजर आ रहे हैं आप इसमें से 5 ब्रांचें टर्निंग में आ जाएगी। आप 5 स्टिफ वाली जो ब्रांचेज है उनको रिमूव कर दिया। ये सबसे बेस्ट ब्रांचेज बोल रहे हैं, दीज आर द डिजायरेबल ब्रांचेज, है ना, दीज आर नॉट डिजायरेबल। ठीक है जी, इसी में करंट ब्रांचेज में क्वालिटी फ्रूट लगता है और ये अपने आप झुक भी जाती है। जितनी ये झुकेगी उतनी ये इसके साथ कम कम्पीट करेगी। न्यूट्रिशन फ्लो ऐसा होता है, इसमें रुक जाता है, रुकने से आपके बीम बनते हैं, है ना जी। जितना फ्लो चढ़ेगा तो उतना वो फिर ग्रोथ लेगा। ठीक है जी, लिटिल बिट हॉरिजॉन्टल, हाँ बस थोड़ा सा नीचे हो ना हॉरिजॉन्टल, मतलब वहाँ से ऐसा हो, ठीक है ना जी, तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह रुक जाते हैं, स्पर बनते हैं। So I'll just finish the tree with, I think, I'll remove 2 more branches just because that's my gut feeling of You complete your one there and say one down here where there's 3 overlapping altogether. So that's the finish of this tree for me. Yeah, so one thumb rule or something to keep in mind, or principle for trees like this, is to almost to have a plan to remove the biggest 2 branches in the tree each year. And if you carry that out, you will